ठीक है। I I'm hope just ये पीछे से तो स्ट्रीम नहीं करता because I started the meeting some 5-6 minutes ago, like नहीं five नहीं, six minutes to 4. it just started streaming. I can see Okay, it. okay, great. Maybe I should change my name also. Hmm. Assalamu alaikum. Your camera is also off. Okay, that just happened. Fine. Assalamu alaikum. How are you, Miss Faiza? I'm much better, alhamdulillah. How are you? I am good. Extremely generous of you that despite आपकी तबीयत इतनी खराब थी, you said कि नहीं, we will go ahead with this and we'll do the chat as planned. So let's start officially. Basically, what do I say? We are at home today. We are playing on our home ground. Last two chats, we were having Unreal people from Reality Forge and Pakistan user group. Today, we have our very own founder and team member, Miss Faiza, with us. So it's like, क्या कहूँ मैं इनकी तारीफ में, it's probably just not possible to differentiate between Code Girls and herself. It's one and the same. It's synonymous, be it her, be it Miss Shamim Rajani, be it Sir Hassan Walvi. It's their directives, it's their vision which has got us so far. So very briefly, she's not only the founder of Code Girls, she's also founder of Women in Tech PK. She's working as product manager for Genetic Solutions, and she's also working for Caterpillars as, Miss, you're working as their director, right? Yes, I am. ओके, सो कुछ आप भी प्लीज ऐड कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप इसके अलावा भी मेंटोर कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को, बिकॉज टेक के अंदर व्हेन इट कम्स टू वुमेन इन टेक, आप जिस किसी से भी बात करते हैं उन्होंने कभी ना कभी आपके सुपरविजन में, आपकी मेंटरशिप में, आपकी गाइडेंस में काम किया होता है. तो टेल अस सम मोर अबाउट योर वर्क. Thank you so much, Samana. So my work is mostly in tech. I started with just an engineering job, lekin over the years it turned more into basically diversity and inclusion in tech. And the main focus is to have, a diverse and a very inclusive team structure here in Pakistan. तो उसके अंदर पे जितने different initiatives हैं, women in tech है, code girls है, इसके अलावा caterpillars है, all of them are working towards the same agenda. Same goes for CryptoChicks. So Shamim and I work on CryptoChicks as well. Uska bhi same agenda hai to have more women in emerging tech or tech fields. Or mentorship training, this is something that I wanted to be a teacher always. I don't know why. So that kind of thing stayed with me throughout my career and even before I started working, like when I was in university. So I kept on teaching throughout my life. So I think वो आदत जो है वो गई नहीं है अभी तक. और I think the reason that you said a lot of people know me, the reason is because my interactions are a lot with mostly students and young people. So people from universities, people who are students from colleges, from institutes like ours and other, जो कि boot camps वगैरह हैं, उनके साथ मेरी काफी ज्यादा frequent interactions होती हैं because enjoy talking to them, especially people who want to come to tech and who are very passionate about it. और दूसरी बात यह है कि because I have taught at different universities for their undergrad and grad tech programs, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा interactions मेरी रही हैं. And I really think कि जिस तरह का passion और जिस तरह की मजे की बातें सुनने को मिलती हैं in youngsters से, so that kind of makes us work more for them and build more things for them, especially women who are now really passionate about building their careers in tech. Yeah. So basically, last two chats that we had were very much focused on, specific technologies. हमने एक gaming platform की, एक animation platform की बात कर ली, Unreal Engine की बात कर ली. फिर हमने एक chat में हम Microsoft Dynamics के Power Platform के ऊपर बात कर रहे थे. What happens is that in the last 1.5 year that I've been with Code Girls, जो हमारी audience है,
I felt that they are very much overwhelmed by the, the large variety of options available. So someone who just does not have an idea कि tech के अंदर काम करने का मतलब क्या हो सकता है या क्या क्या options available हो सकते हैं, so they come with this mindset that maybe I'm going to just start earning online right away. घर पे बैठ के काम करना होता है, या ये कि it's going to be a 6-month course and then I'll be good to be on my feet, So what we thought was that we decided कि एक हम इस तरह का चैट कर लेते हैं कि जो कुछ बेसिक एरियाज टेक के अंदर जो हो सकते हैं, करियर्स हो सकते हैं, उसमें से हम चूज करते हैं और हम उसके ऊपर बात करते हैं कि आपका अगर नीड ये है और आपका स्किल बेस ये है, तो इज इट द राइट चॉइस फॉर यू और नॉट, सो दैट होलिस्टिकली हम कुछ एरियाज को कवर कर सकेंगे और उसके ऊपर मतलब हमारी कोड गर्ल्स की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम इम्पार्ट कर रहे हैं वो मोस्टली इसके अंदर आ जाएंगी. सो देयर इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, there is developer functional or admin expertise on platforms like Salesforce हो गया, Microsoft Dynamics Power Family हो गई. फिर इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग एक नीश है, ये एक सेपरेट एरिया हो जाता है completely. इसके अलावा यूजर इंटरफेस डिजाइन अगेन फॉर सॉफ्टवेयर पर एप्स इज अनदर completely separate domain. Then we come to quality assurance and technical writing. इसी तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट अब क्रिएट हो गई है, स्पेशली बिकॉज a lot of foreigners, a lot of international platforms, a lot of international businesses are looking for people to work for them remotely. तो उसमें virtual assistants और customer success management के लिए उनको staff चाहिए होता है. That's a separate niche. Then we also have content writing and social media management. तो ये अगर हमने बहुत कम करने की कोशिश की थी, but this is again 6 to 7 different areas altogether. अच्छा, these are the areas that we're going to be discussing, and इसके साथ ही साथ जो हमारी audience है मैं उसको भी थोड़ा सा define कर दूँ. एक तो वो ख़वातीन होती हैं जो फॉर एग्जांपल जिनका बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्नोलॉजी के अंदर ना कंप्यूटर साइंस के अंदर, और वो अब तक जो है वो घर पे थी, but because there is this growing interest around working online and doing business online, तो वो आती हैं और वो समझती हैं कि we can pick up and we start earning somehow. They don't know how or in which particular area, but they just want to get into doing some earning online. Then there's this particular audience के जो कि for example उन्होंने अपनी high school complete किया है, A levels तक complete कर लिया अपनी studies, या उन्होंने 12th grade तक complete कर लिया और उनके पास कुछ महीनों का gap है before they go to the university for further studies. तो they think कि ये time अच्छा utilize हो जाए, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम we should go and do a course, और उस course को हम जब कर लेंगे तो हम एक website developer बन जाएंगे all in all. So that's the second kind of audience that we usually receive at Code Girls, जो admission लेना चाह रहे होते हैं. फिर एक category उन ख़वातीन की है which I personally admire a lot and I see them transition more often into professionals. ये वो ख़वातीन है कि जिन्होंने 5 साल पहले, 6 साल पहले या इससे भी ज़्यादा पहले BScs या BECIS या कोई भी कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट उन्होंने डिग्री की थी, और उसके बाद शादी और फैमिली और whatever other reasons they could not remain in the field. अब वो चाह रही होती हैं, they're trying to find out कि what's currently happening in the field, और वो they're trying to find their footing basically, और वो करती हैं फिर काम, वो यहाँ से सीखती भी हैं और उसके बाद वो ट्रांजिशन भी करती हैं. तो this is basically the agenda of today's chat. Right. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अच्छा, so we are live on Constellat's page. I just saw. I was looking somewhere else. हाँ, that's a very good point. I wanted to talk about it a bit. वो जो earning वाला part है. पहली बात तो ये कि when anyone comes to me and say that they want to make money online or they want to make money by learning tech, it makes me really happy, because tech does offer a lot of opportunities for people who generally in normal conditions wouldn't be able to work. So for example, छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनके ऊपर केयर वर्क की, घर की जिम्मेदारियां हैं और दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो टेक वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है.
एंड नॉट जस्ट इन स्पेसिफिक टेक करियर्स, बल्कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से और बहुत सारी चीजें भी अब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और उसकी वजह से दे आर एबल टू मेक मनी. बट it's not a shortcut, it's not something that you can do quickly कि today you think कि अच्छा मैं कल से ऑनलाइन कमाने लग जाऊंगी और कल से you will start making money. It doesn't work that way. And if someone is telling you कि बगैर कोई स्किल सीखे, बगैर कोई एफर्ट किए आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, तो आई कैन टेल यू दैट इट्स 100% अ स्कैम. आपको जितने भी नजर आ रहे होते हैं ऑनलाइन एड्स नजर आ रहे होते हैं कि जी घर बैठे 2 लाख रुपए कमाएं, 50,000 रुपए कमाएं, 5 लाख रुपए कमाएं, and then they are asking you to just sit down, copy paste links, or they are asking you to give them some money to enroll you in some program. All of these are scams. So that's not what you need to get into. If you really want to build a career in tech, then you will need to invest your time. Thankfully for women, there are a lot of opportunities code girls की तरह पे, जहाँ पे उन्हें पैसे इन्वेस्ट इस तरह से नहीं करने पड़ते, सिर्फ टाइम की रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़े, सो आई वुड रेकमेंड दैट यू डू दैट, बिकॉज जो उसका रिटर्न है दैट इज मतलब एक्सपोनेंशियल उसकी ग्रोथ है. व्हेन यू लर्न अ स्किल एंड यू आर एबल टू मोनेटाइज दैट स्किल, यू आर एबल टू फाइंड वर्क फॉर दैट स्किल. जो हमारा तीसरी वाली क्या जो कि कुछ अरसा जो जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, जिनके पास एक डिग्री थी और अब वो भूल गई हैं सारी चीजें, या बहुत लंबा ब्रेक आ गया एंड दे वांट टू कम बैक. This is like my most favorite audience, because these are the women who are the most passionate about getting back to getting back to their feet, and they want to work, and they are really familiar with a lot of things, so it's very easy for us to kind of place them. और समाना ने कुछ अरसे में ये देखा होगा, मैंने 4 साल में कोड गर्ल्स में देखा है कि जितनी क्विकली हमारे पास ये वाला जो डेमोग्राफिक है ये प्लेस होता है, जो लोग करियर ब्रेक के बाद आते हैं, स्किल अप करके वापस जाते हैं, उतनी जल्दी शायद कोई और जो है वो हमारा सेगमेंट प्लेसमेंट्स की तरफ नहीं जाता. सो ये सारी चीजें हैं. समाना ने बहुत सारे करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम वी विल कीप these 6-7 in mind. So maybe Samana, we can start from one of them and then discuss that in the next. So which one should we start from? Okay. So हमारा जो phase 1 है that's basically wrapped around front end development और JavaScript हम उसके अंदर cover करवाते हैं, मतलब basically HTML, CSS and JS jQuery. So let's start with that, and then we'll also talk about together with it regarding the backend or full stack development किस तरह से हम कर सकते हैं. सही है, बिल्कुल ठीक है. सो कोड गर्ल्स का जो फेज 1 है मोस्टली, या हमारे पास कंसल्टेंट के अंदर भी जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, वो जो है वो बेसिकली आपको वेब डिजाइन और डेवलपमेंट सिखा रहा है. सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंड कुछ लोगों के लिए शायद वो पाइथन के साथ होगा, जेंगो के साथ, कुछ के लिए नहीं है वो. ये जो करियर पाथ है इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसके अंदर वो लोग होते हैं जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं मोस्टली, जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, एंड देन उसके अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जैसे Vue.js है, आपके पास React है और इस तरह के और फ्रेमवर्क्स हैं. ये वो लोग हैं जो वेबसाइट या एप्स का फ्रंट एंड बिल्ड कर रहे होते हैं, मोस्टली वेबसाइट्स का फ्रंट एंड बिल्ड कर रहे होते हैं. इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड पेइंग करियर ऑप्शन, स्लाइटली लेस एज कम्पेयर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट. फुल स्टैक क्या होता है वो मैं आगे आपको बताती हूँ. जब आप कोड गर्ल्स में आगे मूव करते हैं, फिर हम आपसे डिफरेंट ट्रैक्स पूछते हैं. उन ट्रैक्स के अंदर कुछ हमारे पास फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और कुछ फुल स्टैक वाली लैंग्वेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोड गर्ल्स का फेज 1 कंप्लीट करने के बाद PHP लर्न करते हैं, तो PHP इज अ बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका मतलब यह है कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू राइट द सर्वर साइड पार्ट ऑफ द थिंग्स इन मोस्ट केसेस. जो चीजें बिहाइंड हो रही है, नॉट सर्वर साइड एग्जैक्टली, बट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिहाइंड the application interface. So backend development is another track. It is slightly higher paying than the front end वाला. पैसे कितने देते हैं वो भी मैं अभी बता रही हूँ, just comparing all of them. So आपके पास PHP, JavaScript, C#, Node, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी बैकएंड लैंग्वेजेस हैं. देन आपके पास आते हैं फुल स्टैक या मीन स्टैक या मर्न स्टैक. ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट एंड से लेके बैक एंड टेक्नोलॉजी तक सारे काम करते हैं. सो अ फुल स्टैक डेवलपर विल नो ऑल द रिक्वायर्ड फ्रंट एंड वाली लैंग्वेजेस एंड देन बैक एंड वाली लैंग्वेजेस आल्सो. सो हमारे पास जैसे जेनेटेक के अंदर जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं,
वो बेसिकली काम करते हैं या तो मर्न के ऊपर काम करते हैं, या वो काम करते हैं HTML, CSS, JavaScript, jQuery और PHP के ऊपर, और एंड देन MongoDB ऑफ कोर्स। सो इस तरह का एक पूरा स्टैक है। इन सारों के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जो डेवलपर्स हैं वो बैकएंड डेवलपर्स हैं, देन आपके पास फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, एंड देन आपके पास जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं। अगर आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर हैं और आप एंट्री लेवल जॉब के लिए जाते हैं, सो द एंट्री लेवल जॉब विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 50 to 60,000 रुपीज अ मंथ। मैं पाकिस्तान के अभी करंट मार्केट की बात कर रही हूँ। अगर आप फुल स्टैक के लिए जाते हैं सिमिलर पे, और अगर आप फ्रंट एंड के लिए जाते हैं तो स्लाइटली कंपेरेटिवली स्लाइटली लेस, मे बी 55 से 50,000 की पे स्केल में आप जाते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल सैलरीज चाहिए कि यूएस में इन डेवलपर्स को क्या पे करते हैं, सो देयर आर अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स। आप levels.fyi पे जा सकते हैं, आप ग्लासडोर पे जा सकते हैं, और आप इंटरनेशनल सैलरीज वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि लोकल प्लेसमेंट ज्यादा कराते हैं, सो आई एम टेलिंग यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकल मार्केट। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो बाहर की किसी कंपनी के लिए यहाँ पे रिटेनर हायर कर रही है, जैसे रिमोट बेस्ड टाइप कंपनी या इस तरह की कोई कंपनी, सो उस केसेस में जो आपका पे स्केल है वो एक लोकल सॉफ्टवेयर हाउस से कंपैरेटिवली हायर होगा। इन मोस्ट केसेस इट्स डबल और इवन मोर देन डबल, बिकॉज दे आर पेइंग यू इन डॉलर्स। सो अगर आप एज अ फुल स्टैक एंट्री लेवल डेवलपर, वैसे फुल स्टैक में एंट्री लेवल पे ज्यादा लोग नहीं होते बिकॉज आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है फुल स्टैक में जाने के लिए। तो अगर आप एंट्री लेवल फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर जा रहे हैं, सो उस केस के अंदर आप जो है यू विल गेट पेड समवेयर फ्रॉम 600 to 800 till the upper side of $1,000 per month जो है a company will be paying you here in Pakistan. So ये सारा स्कोप है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छा कोड लिख सकते हो, आप लॉजिकल हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल with your team members and people that you are working with. आपके पास लॉजिकल थिंकिंग, critical thinking की स्किल होनी चाहिए, and you should know how to research well because a lot of coding is basically solving problems, और वो problem solving के लिए आपको बहुत सारा research work required है। True. Basically, a lot of people who come to me और वो admission लेना चाह रहे होते हैं, when I tell them about the admission test, तो their first reaction towards it is कि बाकी जगहों पे तो टेस्ट नहीं होता, आप टेस्ट क्यों ले रही हैं? अच्छा, there are several reasons to it, लेकिन एक major concern यही है जो अभी मिस फायदा ने mention किया, कि it's very important for us to see whether you're able to comprehend things, आपकी logical और analytical skills कैसी हैं। Otherwise, eventually, halfway through the course, आप probably overwhelm होके back out कर जाएंगे. That will be a dent in your self-esteem also. Isn't it, Miss Faiza? मतलब अगर एक सीट वैसे भी ज़ाया होती है या एक सीट के ऊपर, even if we just don't talk about numbers, it's like a resource, right? What we're trying to do is help as many women and girls as we can without really putting resources where they're not required. जरूरी नहीं है कि आप डेवलपर ही बने, IT is full of opportunities। अभी हम और चीजें डिस्कस करने लगे हैं, तो टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि whether this is the right track or not. Otherwise, we'll always guide you towards the other options which are available. जैसे कि अभी हम नेक्स्ट जो चीज़ बात करने लगे हैं वो हम बात कर रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म्स लाइक Salesforce और Microsoft Dynamics में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप एज अ डेवलपर या आप फंक्शनल साइड पे या एडमिन साइड पे किस तरह से उसके अंदर काम कर सकते हैं। जी मिस। हाँ बिल्कुल, एंट्री लेवल टेस्ट जो है ना दैट आल्सो केम फ्रॉम अ लेसन लर्न। आई थिंक इट गॉट इम्प्लीमेंटेड आफ्टर यू केम समाना, उससे पहले नहीं था। So that was a learning that we had because when women were coming to the program, वो HTML CSS तक तो कर लेती थी, जैसे ही वो जावास्क्रिप्ट पे जाती थी तो उनको पता लगता था कि अच्छा अब ये प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है, बिकॉज वो विजुअल एलिमेंट जो HTML CSS का उनको इंटरेस्टिंग लग रहा था वो जावास्क्रिप्ट तक जाते जाते खत्म हो जाता था, एंड दे वुड ड्रॉप आउट। एंड व्हेन we would ask बेसिक मैथमेटिक्स की लॉजिक, तो वो उनकी अच्छी नहीं होती थी। So, दो चीजें हमने उसी वजह से की, we wanted them to know basic maths, और इसीलिए हमारा टेस्ट कोई हिडन टेस्ट नहीं है। we tell them कि भाई आपने बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक स्टैट्स, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। बेसिक मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव
difficulty in understanding them, then हमारे लिए थोड़ा मुश्किल, it's not impossible, but हमारे लिए मुश्किल होगा आपको थोड़ा पढ़ाना. और दूसरी बात ये कि हमारे पास इतनी resources नहीं है कि हम आपको ये सारी चीजें भी रिवाइज करा सकें. So ये basic एक prerequisite है that you know how to use a computer and also have basic मतलब metric level की maths की understanding आपके पास होनी चाहिए. और वैसे भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इज मैट्रिक इंटरमीडिएट बेसिकली, तो उतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए नहीं, कॉलेज लेवल मैथ्स आपको पता होनी चाहिए. दूसरा जो हमने बात की जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, जिसके अंदर आपके पास डायनामिक्स है, सेल्स फोर्स है, SAP है, ओरेकल है और बहुत सारे इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के रोल्स होते हैं. एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स होते हैं, एक फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं और देन उसके बाद कस्टमाइजेशन के लिए डेवलपर्स होते हैं. These all are very good options. These are very highly sought after resources, especially in MNCs. The reason being कि especially post COVID, आप post COVID भी नहीं कहना चाहिए, we are still in COVID, but after COVID came, a lot of companies went completely remote. A lot of companies started doing digitization. बहुत सारी companies ERPs और ये systems adopt करना शुरू किए. उसकी वजह से they require these resources. And we see कि local hire करने की जगह हम बहुत सारी बाहर की companies यहाँ पर काम जो है वो लोगों को companies को या लोगों को outsource करेंगे. So this is also a very good career option for you if you want to become a developer in that. Developers are usually doing customizations. If you are interested in administration work, then admin wala track is for you. And then if you want to become a functional consultant, of course you can do that. Functional consultant is more like a business analyst, project management type of a role. हमारे पास इस वक्त Microsoft Dynamics we are starting, Salesforce हम करवा चुके हैं, करवाना प्लान कर रहे हैं आगे जाके. अभी चल रहा है. We have cohort 2 in progress and cohort 1 we have already finished. बिल्कुल. So इसके अंदर जो है वो अगेन आपके पास प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग स्किल्स, चाहे आप एडमिन कर रहे हो, चाहे फंक्शनल कंसल्टेंट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स की, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स की, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए. वही 50 to 60,000 का जॉब का रेशो है. It usually take a month or so for the recruitment process. So if you apply today, right now in today's market in Karachi, and if you have a good CV and good skill set, I'm pretty sure that you will get a few calls a week, and the recruitment process is going to take maximum a month or so for you to find a good job. Niche specific jobs हैं ये, good growth opportunities हैं, और of course companies are embracing the platform, so it's really important. इसके अंदर जो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि it's not about the breadth of your knowledge but the depth of your knowledge. So if you are becoming a platform expert, then you need to know the platform inside out. So वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बिकॉज मैंने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मुझे कभी कभी I used to joke with them कि आप लोग सुबह नाश्ते में घोल के पीते हैं क्या डायनामिक्स को, because they knew it so well. They knew everything about the platform itself, that I would ask them a feature and they would say yeah, that's in there. Or so you need to have a lot of in-depth knowledge of that platform. Truly, because that's the way to go. Otherwise वही बात है कि आप थोड़े से अरसे में उसको जितना because आजकल हर कोई इतनी जल्दी में है, खास तौर से the youngsters that we have, it's not even their fault because there's so much coming up. They probably think कि हर चीज ही सीख लेनी चाहिए, और उस हर चीज के अंदर what we forget is कि the depth of knowledge in any one particular field is probably going to take you a longer way than the knowledge that you have, like little bit of knowledge about everything. So with that, moving on to our third area, graphic designing or video editing या animation के अंदर, जिसके अंदर जाहिर है अगेन कोडिंग और लॉजिकल स्किल्स नहीं है, बट ये प्योरली स्किल ओरिएंटेड है. बिल्कुल स्किल ओरिएंटेड है, एंड इट आल्सो रिक्वायर्स एन इनेट टैलेंट इफ यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन, a person who yes, so that is really important, especially when it comes to animation and graphic designing, or of course video editing के अंदर. Of course जो है वो ये उन लोगों के लिए है जो visual mediums enjoy करते हैं, who are artistic. It requires a lot of tool specific knowledge. It also requires attention to detail and artistic talent.
salaries इसके अंदर starting salaries comparatively low हैं than from developers. So we see around 35,000 an entry level job, and it is going to take you a couple of months to find a good job. There are lots of jobs available, but lots of competition as well. And the only thing that can help you standing out from a million other graphic designers or a million other video editors, sorry, is having a portfolio. Yes. Are you there with me? Gigi, I am. Okay, all good. I hope Yeah, we my haven't throat is just, we have caused you to talk more than your throat yeah. could take it. Okay. Say so Yeah, basically. so it requires a portfolio. So you need to spend time on building a portfolio. That is a must, otherwise it will become difficult. Obviously it's a visual medium, तो आपको अपने portfolio के ऊपर लाजमी काम करना है. Right. Then we move on to the next area, which is user interface design या UI UX design. Achha, that is a very, very interesting thing, because user experience is comparatively newer than the other fields. और दूसरा ये कि अब जो है, a lot of these people, we call them product designers. So they are not called as user experience designer, but actually a product designer. So आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर रिक्वायर्ड है साइकोलॉजी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, टूल्स, क्रिएटिव स्किल्स, सॉरी, अटेंशन टू डिटेल रिक्वायर्ड है. गुड पेइंग जो है वो करियर फील्ड है, इमर्जिंग है इन पाकिस्तान. You can get very good opportunities and there are a lot of career options available. Tools like Figma, design sprints, की methodology है, लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. और ऑफ कोर्स आपकी डिजाइनिंग स्किल्स होनी चाहिए. यू नो हाउ टू थिंक लाइक अ यूजर एंड एक्ट लाइक अ यूजर. Exactly, that's the most important thing. जब तक कि आपको अपने client की needs का नहीं पता होगा या you're not on the same page with them, उनकी requirements क्या हैं, जब तक वो आप establish नहीं कर लेते, you can never enter into the software development phase. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो it's a very important field. Absolutely, absolutely, and it pays really well, not just locally but internationally also. आपको बहुत ज्यादा इसमें open opportunities नजर आएंगी, and companies are open to hire diverse talent because the diverse talent brings in a lot of new perspective when it comes to global products. Sure. Next हमारे पास है working as a virtual assistant or a customer success manager for a company or any business remotely. अच्छा, ये ट्रैक जो है वो we don't cover it. Same with video editing and animation, don't cover that at Consol है. लेकिन जो है we have seen a lot of people graduate from our programs go there. The reason being that it requires technology skills as well as a lot of organization skills. So being a good communicator, being a good presenter, being able to talk, being able to explain things, write things. So we see a lot of people who are naturally very good at it. So हमें कोड गर्ल्स के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एरिया में काम कर रहे हैं, who are working with international clients, especially यूरोप के अंदर, यूएस, यूके के अंदर. अटेंशन टू डिटेल आपको रिक्वायर्ड है. आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए. सो कैलेंडली आपको पता हो, गूगल के सारे टूल्स आपको पता हो, ट्रेलो फॉर एग्जांपल आपको आता हो, नोशन है, इस तरह के टूल्स आपको पता हो जिसमें आप काम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. स्प्रेडशीट्स आपको अच्छी यूज करने आती हो, CRM के टूल्स आपको आते हो. सो ये सारी चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है. यूजुअली 40 के ऑनवर्ड्स की पोजीशंस, एंट्री लेवल पोजीशंस इसके अंदर अवेलेबल है. जॉब्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, बट लोकली इतनी ज्यादा नहीं है. स्टार्टअप्स के अंदर शायद आपको कस्टमर सक्सेस की जॉब्स थोड़ी ज्यादा नजर आए, लेकिन मोस्टली कंपनीज के अंदर हमारे यहाँ उस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट या सक्सेस मैनेजर की जॉब्स नहीं होती. ये जॉब्स आपको इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ज्यादा मिलेंगी. एंड अगेन गुड करियर ऑप्शन दैट, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मूविंग रियली well in their careers after getting into customer success or virtual assistants.
So what happens is कि यहाँ पे जो companies based हैं वो अपने पास remotely hire करके retention पे रख लेती हैं international companies के लिए. And इस area में in particular इस domain of field में in particular ये भी होता है कि business to business, क्योंकि आपकी जो tools वगैरह required हैं to manage the clients or whatever day to day needs are, वो आपको जब ऑन बोर्ड करते हैं तो आपको नॉर्मली सिखा भी देते हैं. आपकी 2-3 दिन की ओरिएंटेशन होती है, बाद दफ़ा कुछ वीक्स की ओरिएंटेशन होती है, एंड दे एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड द टूल्स एज वेल. बिल्कुल ऐसे ही है. I'm seeing Samana some questions on the Facebook live session. Yeah, I'm trying to note those down because कुछ questions हमें form के through भी receive हुए थे, वो मैंने अपने पास note किए हुए हैं, तो हम उनको answer करेंगे, and in the meantime I'll also take a note of these. लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी रह गई है वो सोशल मीडिया मैनेजर या कंटेंट राइटिंग की रह गई. नहीं, इनफैक्ट आई थिंक वी डिड नॉट कवर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेक्निकल राइटिंग. हाँ, सो क्यूए का जो है वो हमारे पास एक पूरा ट्रैक है, टेक्निकल राइटिंग का नहीं है. A lot of graduates from Code Girls go to QA jobs. It has a lot of opportunities locally bhi, internationally bhi. The skills that you need for being good in QA is the ability to write, research, compare things and think. आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. अगेन लाइक अ प्रोडक्ट डिजाइनर, आपके पास बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, साइकोलॉजी, इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद थिंग्स एंड हाउ यूजर एक्ट एंड बिहेव. स्टार्टिंग सैलरीज जो हैं वो कंपैरेटिवली लोअर हैं, सो 30 to 40,000 के बीच में इन मोस्टली ऑन साइट जॉब्स. और वही मोस्टली ऑन साइट जॉब्स आपको क्यूए के अंदर नजर आएंगी. टेक्निकल राइटिंग के अंदर आपको शायद ज्यादा रिमोट जॉब्स नजर आएंगे. क्यूए के अंदर बिकॉज बहुत क्लोजली टीम के साथ मोस्ट केसेस में इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, सो कंपनीज प्रेफर हायरिंग ऑन साइट पीपल. it's a good field. You can move towards different career options. QA से आप, अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, स्क्रिप्टिंग के अंदर, आप ऑटोमेशन के अंदर मूव कर सकते हैं. मैनुअल क्यूए से मतलब मैनुअल टेस्टिंग से अगर आप जो है वो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं. अगर आप डिजाइन की तरफ जाना चाहें तो प्रोडक्ट डिजाइन इज अनदर एरिया. अगर आप राइटिंग में जाना चाहें तो फिर टेक्निकल राइटिंग एंड बिजनेस एनालिस्ट, एंड देन these areas can be covered. Okay. And with that we have the last area left, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कंटेंट राइटिंग. उसमें हम आ जाते हैं. इन दोनों को साथ में डिस्कस करने का रीजन ये है कि कंटेंट ही मेजरली मोर और लेस इट्स व्हाट वी आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट. आल्सो वी आर केटरिंग द कंटेंट, राइट? बिल्कुल. Again, social media or content writing is not something that we teach at Consulate या Code Girls, लेकिन हमने वो भी जॉब्स देखी हैं जो लोग कोड गर्ल से ग्रेजुएट होके जाते हैं. अच्छा, रीजन ये है कि जब हम बता रहे हैं आपको कि इन जॉब्स में लड़कियां जा रही हैं, तो वो इसलिए कि उनको जो बेसिक टेक की नॉलेज है ना वो फिर कोड गर्ल से मिल जाती है. कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू राइट emails, a lot of other soft skills. These are the things that they learn at Code Girls. So when they're learning all those skills, then finding a job that matches their aptitude and then matches their interest becomes easier. So we see a lot of girls also going into social media management and writing. Sorry. So उसके अंदर जो है स्कोप है, उसके अंदर बहुत सारा, लोकल भी इंटरनेशनल भी. हर कंपनी को अपना सोशल मीडिया पेज चाहिए होता है, उन्हें कैंपेन्स रन करनी होती हैं, एड्स चलाने होते हैं. सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन और राइटिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. कुछ कंपनीज आर आल्सो लुकिंग फॉर पीपल हु कैन आल्सो डू बेसिक डिजाइनिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, जो कैनवा के ऊपर लोग बना रहे होते हैं और इस तरह की चीजें. सो वी सी दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैव गॉटन इनटू इट. This requires you the ability to be good at social media, the ability to write good and research well, basics of SEO. तो एससी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको पता हो, थोड़ा सा सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में पता हो, थोड़ा सा मीडिया बाइंग के बारे में पता हो कि एड्स कैसे चलते हैं, ये सारी चीजें अगर आप पता हो तो बहुत अच्छा है. 30 to 40,000 के बीच में सैलरी रेंजेस हमने देखी हैं जाते हुए. इट विल टेक यू अराउंड अ कपल ऑफ मंथ्स टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी. Again, same like the graphic designing jobs, lots of competition.
So creating a portfolio is going to be your way to go. So build a portfolio around it, write blogs, create a Medium blog for yourself, create a WordPress blog for yourself. If you want to go into content creating, if you want to go into social media, learn how to design posts, learn how to create editorial calendars or content calendars, learn how to do keyword research, learn how to basically compare social media strategies or building social media strategies. HubSpot के ऊपर आपको दुनिया जहान की चीजें मिलेंगी. You can study a lot of things from there. I've run a lot of social media pages I run it for Code Girls, sometimes Women in Tech के लिए, और भी बहुत सारे कंपनीज के लिए मैंने रन किए सोशल मीडिया पेजेस, इवन दो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से. आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर, but I learned it from HubSpot की academy से and a few other places. मैंने SEO का एक कोर्स कर लिया गूगल से, just to get the basic understanding. So you can learn the same way. If it's a requirement of your job, or if this is something you are interested in, there are lots of information available online and you can just go ahead and learn those things. Again, if you are looking for international salaries, आप जो है वो Glassdoor पे देख सकते हैं, लेवल्स पे देख सकते हैं, ब्लाइंड पे देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगी. जो सैलरीज मैं आपको बता रही हूँ अभी, वो इट्स नॉट लाइक, मतलब एक्सेप्शंस इसमें होंगी, बहुत सारी कंपनीज बहुत कम पे करेंगी, बहुत ज्यादा पे करेंगी. ये वो एवरेज लेवल्स हैं जो हमने देखे हैं जब हम देखते हैं कोड गर्ल्स की लड़कियां डिफरेंट जगहों पे हायर हो रही हैं, डिफरेंट रोल्स, तो किस तरह की सैलरीज उनको पे हो रही है. सो दिस इज द डेटा इज कमिंग फ्रॉम देयर. 5K is what we have observed के social media manager या as a content writer आप easily earn कर सकते हैं. And let me just share this a bit. So हमने जो कोड गर्ल्स की के अंदर जो 2 सक्सेस स्टोरीज हैं, एक हबीबा मुर्तजा और एक महक नयानी, both of them they learned basic programming skills code girls से, then they did advanced tracks also, multiple advanced track किए उन्होंने, हबीबा ने भी और महक ने भी, but they both really enjoyed writing and they both started their careers in writing. And I think मतलब ये जो हमने starting salary बताई है, से तो बहुत ज़्यादा they are making right now after 2 years. So they're making really good money as technical writers. They both have worked with me. Habiba is still working with me. Habiba is working part-time and remotely. Behak is working full-time and remotely. So writing के अंदर बहुत सारी remote jobs हैं. And उसके अंदर बहुत अच्छी growth भी है. If you're good at what you do, definitely. Definitely. The one thing that tech offers is, the ease of growth. There is an opportunity for growth and there is ease of working remotely. But what it does not offer, or as for that matter, कोई भी field आपको offer नहीं करती, वो होता है instant response या instant, कि today you moved in and tomorrow you started getting results. मैं आपसे पूछना चाहूँगी because you have a very well-rounded experience when it comes to freelancing. आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम इंगेज किया है, आपने काम किया है, तो टेल अस, was your journey actually easy? Was it just like कि आज शुरू किया and कल से जो है वो started making money? Absolutely not. I started freelancing in मतलब on Upwork. I'll talk about Upwork mostly because वहाँ लोगों का interest उस पे ज़्यादा होता है. So I started in April 2017, and I was working 10 hours, 5 to 10 hours every week on Upwork, trying to improve my profile, improve my cover letters, build samples, add things to my portfolio, set up a blog. मतलब पूरी एक brand मैं बना रही थी उस time पे बैठ के. And the first project that I got was in September. So April, May, June, July, August, and then September. So after 5 months, I got my first project, and that was like $120, $30 या $150, something like that. और वो काफी सारा काम था $150 के हिसाब से, but because it was a first project, I wanted to just get the foot in the door. I was so over it कि यार काम ही नहीं मिल रहा, and it went really well. And then मतलब that $100 too, an hour. I mean, हाँ. obviously the pay that you're sharing is obviously for the whole project, that as well as the amount of investment आप 2017 से बता रही हैं, but जो आपका experience और जो आपने skills
अटेन की हुई थी उससे पहले, बहुत पहले से, वो एक अलग जर्नी है। तो मतलब बिल्कुल, and I'm not लॉन्चिंग, saying कि I was new to field. I'm telling या you that I'm working since 2009. So सो 2009 से 2000 तक 8 years की जब मैं फ्रीलांसिंग करने गई तो तब मुझे इतना टाइम लगा है। तो अगर आप सुबह उठे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो शाम तक आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल। सो आई थिंक वो बिकॉज हमारे यहाँ वो बड़ा क्विक फिक्स और इजी मनी और उस तरह से फ्रीलांसिंग को ब्रांड कर दिया गया है एक तरीके से। सो लोग उसको करियर ऑप्शन नहीं समझते। आपको इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी। आई एम प्रीटी श्योर आपकी इतनी इंटरेक्शन होती है सारे स्टूडेंट्स वगैरह से, और मेरी भी होती है कि वो कहती है कि लड़के लड़कियां दोनों ही कहते हैं कि मेरे पास दिन में 2 घंटे फ्री होते हैं, क्या मैं फ्रीलांसिंग कर लूं? एग्जैक्टली दैट्स नॉट द वे इट हैपेंस। दैट्स नॉट द वे। या एब्सोल्युटली नॉट। 8 से 9 साल में आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए काउंटलेस प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए होंगे, यू नो, यू मस्ट हैव हैड दोस टेस्टिमोनियल्स अंडर योर बेल्ट। उसके बाद जब आपने लॉन्च किया अपने आपको एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, दैट स्टिल टुक यू अ नंबर ऑफ मंथ्स। तो अगेन कोई भी और कहीं पे भी सक्सेसफुल, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि आप अगर कहीं पे लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं आमियाना जबान में, तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड योर एफर्ट। सो टेक इज नो एक्सेप्शन व्हेन इट कम्स टू दैट। एब्सोल्युटली। टेक डजंट हैव उस तरह का बैरियर टू एंट्री बिकॉज इसका बैरियर टू एंट्री लो है। यू डोंट नीड अ डिग्री टू गेट इनटू टेक, विच इज अमेजिंग बिकॉज गेट यस, कीपिंग उस तरह की नहीं है। और बहुत सारे केसेस में कंपनीज डिग्री की तरफ देखती भी नहीं है, दे बिल्कुल जस्ट लुक एट द स्किल सेट विच इज ग्रेट, बट एट द एंड ऑफ द डे स्किल को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई। तो अगर बिल्कुल स्किल ही नहीं आती तो फिर बात खत्म हो गई। हमने बिल्कुल। इन कैटरपिलर्स का मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैटरपिलर्स का एक पूरा प्रोसेस है कि वी पहले मेक श्योर कि अगर कोई उसके फ्रीलांस ट्रैक में आ रहा है तो क्या सेलेबल स्किल है। और हम सेलेबल स्किल कैसे पता करते हैं कि अच्छा स्किल है, कहाँ सेल की है, कितने पैसे कमाए, क्या इसके बदले कोई जॉब मिली, क्या वो जॉब आपने सस्टेन की, क्या कोई फ्रीलांस क्लाइंट था, क्या फीडबैक था उस क्लाइंट से। तो हम इस लेवल की जो है वो स्क्रूटनी करके एंड देन वी लेट पीपल इन। द रीजन इज कि freelancing itself has a lot of things that you need to learn. Freelancing is a subject matter itself. तो अगर स्किल ही नहीं होगी तो फिर आप कितनी भी फ्रीलांसिंग पढ़ा लें, आप करके क्या देंगे काम जब आपको काम ही नहीं आता। Exactly, makes sense. Miss Faiza, I think with this we should move to the questions जो कि हमें रिसीव हुए हैं। कुछ questions मुझे पहले रिसीव हो गए थे जब मैंने पोस्ट किया था कि we are going to have this chat, so people wrote to us through the form, और मैंने उनको जो है स्ट्रीमलाइन करके कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया है विच मोस्टली कवर ऑल ऑफ द आइडियाज जो कि लोगों ने पूछे हुए थे। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद द स्टफ जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि कल हमारी एडमिशन ड्राइव भी है फेज 1 के लिए। सो दोज गर्ल्स जिन्होंने कल आना था हमारे पास, आई फेल्ट कि इट वुड बी रियली नाइस कि अगर वो ये चैट सुनने के बाद आए, so that they can also make up their mind कि ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर हम आ रहे हैं, is it actually what we're looking for? So one of the girls, one of the ladies we have, Javeria Uzair, she says कि she's a graduate, मतलब she did her bachelor's in arts some very long time ago, and she's a housewife, she's never done any job, and she did her studies from a government school and college. Does that matter? Should that be a barrier for her to enter in a tech oriented field? एब्सोल्युटली। मैंने मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। गुलशन कॉलेज है सफारी पार्क के सामने, दैट वाज माय कॉलेज। इफ यू हैव सीन द कॉलेज लुक्स लाइक अ खंडर बेसिकली। इट डजंट मैटर इफ यू आर गुड विद स्किल्स एंड यू कैन इम्प्रूव। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई अपने साथ लेके पैदा नहीं होता, वो आप पॉलिश करते हैं। यू वर्क ऑन देम। यू एंड आई आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। The Yes. work that we do today and the way we talk and the way we communicate, ये यूनिवर्सिटी ने तो नहीं सिखाया हमें। We नहीं। learned it on the job, right? We improved ourselves every day. We learn new things. So it's not going to be a barrier कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। बैरियर ये है, can you work hard, can you give time, can you stay focused, and can you stay persistent.
तो ये आपके बैरियर्स हैं यहाँ पे. अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्लेस फॉर यू. लेकिन इफ यू कैन डू दैट देन it's very welcoming for all of you. मैंने अभी जिन दो खवातीन के बारे में अपनी टीम मेंबर्स के बारे में आपको बताया, none of them are from engineering background or CS background. I think one has done BA, another one has done I think an MA in international relations or something. So and they are very proud women in tech and they're doing very well in their careers. Or Code Girls में we have nearly 200 stories like that. So it should tell you that there is space for everyone, but do you have what it takes to get into this career? Because it is demanding. There is no doubt about it. I think, Javeria, I hope that this answers your question. Next, हमारे पास उरूज कह रही हैं. She's an MA and she's B.Ed honors also, mashallah, and she's a teacher. So वो कह रही हैं कि how can a teacher take advantage of tech to fuel up her finances as teachers are paid really low? Yeah, sadly that's really true. और हमने कोड गर्ल से बहुत सारी टीचर्स को भी आते देखा है जो स्कूल्स के बाद आ रही होती हैं शाम की क्लासेस में. बिल्कुल आप कर सकते हैं. आप ये टेक्नोलॉजी के जो टीचर्स है दे आर पेड कंपैरेटिवली हायर देन अदर टीचर्स. So you can learn technology from code girls, learn how to code, learn all about computers, बहुत सारी चीजें, and then move towards not teaching basic courses, and you can move towards teaching computer science. One thing is that you can do that. Already you have 2 degrees, so that's getting a job in tech. A teaching job in tech is not going to be a problem. Another is that you can do a career switch. आप करियर स्विच कर लें. आप अगर टीचर हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी ऑर्गेनाइज. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी ह्यूमन स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप जो है वो टेक्नोलॉजी लर्न करके टेक्नोलॉजी में मूव कर लें. आप जो है वो उसके अंदर आप इस टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन के अंदर भी जा सकती हैं. बिकॉज हमारे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कोड गर्ल से पढ़ती हैं, 1-2 साल टेक में काम करती हैं, देन दे बिकम ट्रेनर्स देमसेल्व्स. सो आप उस तरह भी कर सकती हैं. और आप चाहें तो फिर यू कैन स्टार्ट अ पैरेलल करियर इन टेक ऑल्सो. सो आई नो अ फ्यू पीपल जो कि सुबह में टीचिंग करते हैं बट शाम में दे वर्क एज वर्चुअल असिस्टेंट्स और दे वर्क एज social media managers, or they work as writers, and some of them also work as landing page designers and coders and all other things. तो आप ये भी कर सकती हैं. So there are multiple options, but again, because I'm a woman myself, so I empathize with the kind of work pressure that we all have. So आपने उसको evaluate करना है कि can I do that? Is it humanly possible for me to run all of this together? Also, I feel that जिस तरह से virtual चीजें हो गई हैं, I don't know, I'm not going to take it as a tech oriented career path, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. फॉर एग्जांपल, आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS or for any international exam, they need teachers and they actually pay well. So depends on your subject matter expertise also कि आप किस चीज़ में पढ़ा सकती हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट को क्या केटर कर सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास सादिया हैं. वी गोइंग टू डिस्कस नाउ लाइक लिटिल क्विकर देन बिफोर बिकॉज हमारे पास थोड़ा कम टाइम रह गया एंड क्वेश्चंस अभी भी हैं काफ़ी सारे. तो सादिया जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है और 2020 में ड्यूरिंग कोविड उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी. शी वर्क्स रिमोटली फॉर अ स्टार्टअप एज एन इंटर्न, बट शी डिड नॉट लर्न मच देयर एंड देन शी सेज दैट शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम हर करियर. नाउ शी वांट्स टू स्टार्ट हर करियर अगेन and does not know where to start. She has a CS degree, right? You said Software that engineering. Software engineering, yes. It's very easy for you. It will come back to you. Just if you can't come to Code Girls, go to Introduction to Computer Science using Python का course on Coursera या edX का Introduction to Computer Science का course. Start from there. Start from the basic of C++ या Python या whatever. Just start from there, complete that course. Most of the things will come back to you. Then the next thing you need to do is take a look at data structures. The next thing is you take a look at computer architecture a bit, and then you are ready to just prepare for interviews. अगर आपको लगता है कि आप unstructured learning नहीं कर सकते, then come to structured learning. Come to Code Girls. Phase 1, I don't think you will require to do phase 1. अगर आप थोड़ी सी prep कर लें और phase 1 का test pass कर लें, तो आप डायरेक्टली फेज 2 में जा सकते हैं और आप फेज 2 में जाके टेक्नोलॉजी पे कर लें,
PHP पिक कर लें, Node पिक कर लें, Flutter पिक कर लें, जो भी पिक करना चाहें पिक कर लें, Salesforce पिक कर लें, and then go and complete that and find yourself work. Yes, as long as your programming skills are strong, आपने एक दफा कोडिंग की जो बेसिक्स हैं वो समझ ली हैं, फिर कोई भी नई लैंग्वेज पिक करना है या कोई भी नया टूल या प्लेटफॉर्म पिक करना है, it should not be difficult. Yeah, shouldn't be difficult. Hina Shabir is enrolled with us in Salesforce, and what she's saying is that she's an online teacher, a social media manager also, and she already knows the basics of e-commerce, but she's not sure where to start from. कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को जो है वो फेसबुक पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे वेंचर कर सकती हैं. अच्छा, ई-कॉमर्स के लिए अभी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम है जो कि ई-कॉमर्स इन इटसेल्फ सिखाता हो, बिकॉज अगेन इट्स अ होल सब्जेक्ट मैटर. लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फेम्प्रो का जो ग्रुप है जो नादिया पटेल चलाती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यू टू लर्न बेसिक थिंग्स. अगर आपको शॉपिफाई सीखना है फॉर एग्जांपल, तो हम टेक फॉर गर्ल्स के साथ हर साल वर्चुअल वर्कशॉप्स कराते हैं, आप उससे शॉपिफाई सीख सकती हैं. अगर आपको ई कॉमर्स और बिजनेस इन इटसेल्फ सीखना है, तो उसकी कुछ बेसिक्स हम कोड गर्ल्स के हैं जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और सोलोप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाते हैं. तो बेसिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सिखा रहे होते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवस भी सिखा रहे होते हैं, बहुत सारी बेसिक ये वाली चीजें भी सिखा रहे होते हैं. लेकिन अगर आपने इन इटसेल्फ ई कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट मैटर पढ़ना है, तो आई थिंक अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी like Fempro is going to really help you. Before you jump into business, I would recommend that you sit down with someone who already runs a business and discuss it with them. And how can you manage that? Yeah, और उस बिजनेस ने probably सक्सेस जो है वो देखी हो, मतलब उनकी ट्रांजिशन हुई हो, then only you can basically learn from them, learn from their experiences. A couple of years who have run the business and have positive cash flows, मतलब made some profit out of it, and the business is consistent. मतलब ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने में एक सेल हो रही है, ये नहीं हो रहा. Regular orders आ रहे हैं उनको and they're making money, so you learn from them. राइट. जैनब का जो क्वेश्चन है वो मोर और लेस सादिया की तरह ही है. जैनब ने भी BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो आई होप जैनब बेसिकली जो मैम ने आंसर सादिया के लिए दिया था दैट आल्सो सफिसेस फॉर यू. लास्ट हमारे पास इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन है एक्चुअली. समीन अरशद जो हैं, इन्होंने भी NED से ग्रेजुएट किया है BCIT में. शी इज वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये .NET डोमेन में काम करती रही हैं, लेकिन अब ये ऑन हर ओन शी इज लर्निंग पावर प्लेटफॉर्म एंड शी इज आस्किंग कि वो किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकती हैं पावर प्लेटफॉर्म के अंदर जॉब्स के लिए. आई थिंक समीन दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टू पावर प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए जो हमारी लास्ट चैट थी आप प्रॉब्ली उसको रिविजिट कर लें, हमारे फेसबुक पेज पे वो मौजूद है. एंड if you still don't find your answer, what you can probably do is कि आप पाकिस्तान यूजर ग्रुप को कांटेक्ट कर सकती हैं, या आप हमारे अपकमिंग कोहोर्ट में ऑब्वियसली इनरोल हो सकती हैं, जो हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का पावर प्लेटफॉर्म का कोहोर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, उसमें ये होगा कि आप जितनी भी ऑल अराउंड, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग जिसके अंदर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, बट जो भी हमारी फीस होती है वो रिफंड हो जाती है एट द एंड व्हेन यू ग्रेजुएट. बट व्हाट हैपेंस इज कि आपका उसके अंदर एक पूरा कम्युनिटी आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगी. हमने लास्ट चैट के अंदर ये डिस्कस किया था कि इस कोहोर्ट का जो सबसे बड़ा एक चार्म होगा या जो इसके अंदर एक लुक्रेटिव चीज़ है वो ये है कि वो आपको एक पूरी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी एनी मोर अलोन वर्किंग इन पावर प्लेटफॉर्म. आपके साथ आपके इर्द गिर्द और बहुत से लोग होंगे जिनकी एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकती हैं और उनके थ्रू आपको एक माइलेज मिल सकता है. Miss, would you like to add something? Definitely. Sameen, if you're learning on your own, if you're very good at it, and if you enjoy it, then keep doing it. But if you need a peer network, if you need a structure and a community, come to the Dynamics Power Platform course. It's virtual, and we are working with Pakistan User Group, and they have promised us that they will connect us with employers also. So hopefully we'll also help you find a good placement once you graduate from the program. So I mean, if you have 7-8 years of experience in coding as well, that's absolutely amazing. We need more people like you. So definitely.
आप प्रोग्राम में आ जाएंगे, so it's going to really help you find structure and a trainer and a mentor also. So वो आपको अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर देंगे, and if you already know the basics of it, you can quickly learn it and get ahead, in your course. Yeah. Pay scale scope of Salesforce. हिना ने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है उनसे, हमने उसको केटर कर दिया था. Salesforce का हमने मेरे ख्याल है पे स्केल डिस्कस कर लिया. हाँ, it starts from 55,000 onwards. ये डेटा हमने अभी Salesforce की ऐसे हायरिंग्स नहीं की है, ना डायनामिक्स की है. कि डेटा मेरे पास जो है वो फैसल के साथ एक कॉन्वर्जेशन में आया था, and then I've spoken to a few other people who hire Microsoft Dynamics ही और Salesforce के resources. So अब entry level job is around 50, 55, 60, 65,000, ये वाली पे स्केल के रेंज है. स्कोप है उसका, मैंने अभी आपको बताया कि कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव कर गई हैं. सो दे नीड पीपल. इंटरनेशनल कंपनीज आर आल्सो हायरिंग लोकली, सो यू विल आल्सो फाइंड international people who are looking for admins and who are looking for functional consultants in Pakistan. So that is also going to help you. So there is a lot of scope, and there are multiple levels to it also. So there are, I think, certification level. Salesforce की जो कुरतुलैन हमारे पास पढ़ाती हैं, तो वो आपको वहां से information मिल जाएगी. If someone wants more specific details on Salesforce, then Samana can definitely connect them. Actually, Hina is already enrolled in our current cohort for Salesforce. So Kuratulayan probably is the right person. Hina, you should go to her. Next, हम last बिल्कुल हमारे पास जो एक रह गया है question, वो ये था कि can we please discuss Python and DS scope? That's a very good question. पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी लोग मास्टर्स कर रहे हैं, आई थिंक CS के अंदर आधे से ज्यादा डेटा साइंस के अंदर माइनस वो जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं, और आधे से ज्यादा लोगों का यही सवाल है कि अब क्या करें. बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डेटा साइंस के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा. कुछ कंपनीज हैं जो डेटा साइंटिस्ट हायर करती हैं, जिनका मुझे पता है कि ये डेटा साइंटिस्ट हायर करती हैं. जैसे आई थिंक ऑन टॉप, आई थिंक एफिनिटी इज द कंपनी दैट हायर्स. हमारी कुछ टेलकोज हैं जो डेटा साइंटिस्ट हायर करती हैं. कुछ बैंक्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं. कुछ हमारे पास रिसर्च फर्म्स हैं जैसे मैकेंजी है, इन्वेस्ट टू इनोवेट है. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेटा साइंस के लोग हायर करती हैं. एंड देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इमरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई फॉरगॉट देयर नेम. रैपिड कंप्यूट है, they also hire people in data science. So these are some systems limited also hire data scientists. So these are the few companies that hire data scientists in Pakistan. लेकिन इतना ज्यादा स्कोप अभी पाकिस्तान में नहीं है. So आपको उस तरह से जितनी डेवलपर्स की और QAs की और PMs की जो वैकेंसीज नजर आएंगी, उतनी आपको डेटा साइंस में नजर नहीं आएंगी, और आपको उतना ज्यादा रिफाइंड काम भी नजर नहीं आएगा. सो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट आपको ये कंप्लेन करते मिलेंगे कि हम सिर्फ बैठ के डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं और हम एक्चुअली साइंस वाला काम उसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. सो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. बट अगेन with how things are changing, we are really hopeful कि ये फील्ड कुछ ही अरसे के अंदर it's going to turn around. इसी तरह जो हमारे बड़े e-commerce के स्टोर्स हैं, दराज हैं, इस तरह के रिलेटेड स्टोर्स हैं, they are also now looking for data scientists, and they are looking for hiring data scientists. So again, slowly and gradually it's there, it's coming. लेकिन ये कि it's going to take a while for this field to become completely mature here in Pakistan. Internationally, of course, there are opportunities available. Python जो है वो सिर्फ डेटा साइंस के लिए यूज नहीं होती, Python और भी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है. तो अगर आप सिर्फ Python in itself लैंग्वेज का पूछ रहे हैं मुझसे, तो ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं. वेब के अंदर Django है और भी दूसरी सारी चीजें हैं. The language is extremely powerful, easy to learn, very recommended for people who are starting to learn programming. So definitely अपनी स्किल उसके अंदर पॉलिश कर लें. डेटा साइंस के रोल आपको नजर आएंगे, लेकिन जिन कंपनीज का मैंने आपको बताया उनका मुझे स्पेसिफिकली पता है कि दे हायर डेटा साइंटिस्ट इन पाकिस्तान. मैं आपको just give me a second, I need to google the name of the company. Next Degree. So the company's name is Next Degree. Imran Moinuddin साहब की company है. They specifically work in data science and data engineering. So it's a very good company to find work at. So you can also check that out. Thank you so much, Ms. Faida. With that, we are
nearing the closure of our chat today, मैं screen share करके आपको बहुत briefly बताना चाहूँगी हमारे upcoming cohorts के बारे में. Can you see my screen? Yeah, I can see that. Okay, so basically tomorrow we have an admission drive at our address in Karachi और वहाँ पे हम front end development phase 1 के admissions ले रहे हैं. उसके साथ ही साथ हमारे पास admissions अभी open हैं Microsoft Dynamics Power Platform और Software Quality Assurance के cohorts में. ठीक है, and for future you can always follow our Facebook page. आप Code Girls का Facebook page follow करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि और कौन-कौन से cohorts हमारे आ रहे हैं. Next we have मैं थोड़ा सा आपको overview भी दे दूं कि when I say admission test for phase 1 या admission drive for phase 1 what this is all about. हम ये बता चुके हैं कि phase 1 is all about HTML, CSS, JavaScript and jQuery जिसके अंदर it's a 12 to 16 week program, 12 weeks for those जो के 4 days a week में classes लेते हैं Monday to Thursday and 16 weeks for those जो कि सिर्फ Friday Saturday को commitment कर सकते हैं given their other preferences या जो भी उनकी commitments हैं. So ये एक होता है. उसके अलावा वीकेंड्स पे हम इस प्रोग्राम के अंदर कोर स्किल्स की मिस ये ऑलरेडी बता चुकी हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बी इट फाइनेंशियल लिटरेसी बी इट मेकिंग योर रेज्यूमे हम वो सारी चीज़ें कवर करवाते हैं बिकॉज वी नो कि जो खवातीन या जो बच्चियां आ रही हैं या तो बहुत बड़े गैप के बाद आ रही हैं या अभी तक उनको एक्सपोजर नहीं मिला. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज बेसिकली वी वांट दैट यहाँ से निकलने के बाद यू आर एक्चुअली मार्केट रेडी to start a job, right? The admission criteria is very simple. You need to be almost 18 or 18 plus because unless you're that, after graduating you can't obviously work in the market. सही है. Education आपकी at least intermediate या 12th grade होनी चाहिए और आपने admission test pass करना होता है. एडमिशन टेस्ट के अंदर कैप जो कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न है वो फॉलो होता है. उसमें IQ, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं. उसके अलावा हम देखते हैं कि आप कंप्यूटर कितना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, आपको गूगल की एप्स यूज़ करनी आती हैं या नहीं, अगर आप ईमेल कर रहे हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं. इफ़ यू स्टक एनीवेयर व्हाइल यूजिंग अ विंडोज़ प्लेटफॉर्म तो आप किस तरह से मैन्यूवर करते हैं उसको. Lastly, how to take admission. It's very simple. Number आपकी screen पे आ रहा है 0333365434. You just need to drop us a WhatsApp message या आप हमें email कर सकते हैं. हमारी email addresses जो है वो हमारे Facebook page के ऊपर मौजूद हैं. And you just tell us your name and you tell us your level of education और हम आपको we'll get back to you and we'll give you all the details. हमारा जो campus है वो PCHS Block 3 में है. And with that, I think we're going to say goodbye for today. Yeah, thank you so much, Samana. I hope thank the you. discussion I should be the one saying thank you. I should be the one saying thank you. I am actually thankful कि आपने despite the fact that you were not feeling well हमें इतना time दिया. And to be honest, I also found a lot of answers जो कि मेरे पास regular queries आ रही होती हैं. Now I have more insight to be able to give them the answers, right? So it was definitely useful. Yeah. I hope it was helpful in the sense that people, when they come to the program or when they come to the industry, they are ready for it. Because and we want them to be ready for it. It may work for some people that you just kick them to the deep end and then ask them to learn to swim. Some people will succeed, but in most cases it's like setting people up for failure. So we want people to know it and then make a conscious decision to come and study. And especially when it comes to Code Girls, the reason being कि हमारे पास sponsored seats होती हैं, and we want to make sure कि every seat counts and every person who graduates goes somewhere. तो वो important for us कि आप आके उस program से drop out ना करें और आप अच्छे से सीख के जाएं. आप काम करें ना करें, फ्रीलांस करें, बिजनेस करें, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, रिमोट करें, ऑन साइट करें, आप जो भी करें, आप कुछ ना करें, आप अपने बच्चों को सिखा दें, अपने भाई बहनों को सिखा दें. But we want to make sure that you learn it, and that process of learning should you enjoy that, and it gives you a challenge, and that challenge opens you up. So that's really important. And of course, matlab, if they need any guidance, if they need any help, our trainers are wonderful. They give a lot of extra time
हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको किसी डायरेक्टली प्रोफेशनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, say we can connect you with them. If you want to talk to someone who works, who's working after Code Girls in a certain field, we can, you know, get you some answers from them also. Whatever requires you to be prepared for the program is what we need right now. So yeah, I think when you come for the test, we also take an interview. When you pass the test, again we do an orientation just to make sure that you are completely aware of what you're getting into. And that's the reason why we are so bent upon making sure that you maintain your attendance. 1500 रुपए की एक मामूली सी हमारी registration fee, and there's no other cost after that, and that too we return or refund, because that's an incentive at least for some people कि आप जो है वो 80% या उससे ज़्यादा अपनी attendance maintain कर लें, और ये बड़ा ज़रूरी है. absolutely, yeah, That shows your absolutely. commitment. That's the only way we see कि commitment है या नहीं है. Thank you so much, Miss. Absolutely. Thank Thank you you so so much for your much, time. and take care. That's all. You too. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.